गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 9वीं कक्षा के दूसरे पाठ गुलाब सिंह पाठ पढ़ाता हूँ। तो हम लेखिका परिचय कवित्री परिचय मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 में जन्म प्रयाग यूपी में हुआ था। बाल्यकाल से साहित्य में उनकी विशेषता रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही। आप कई बार जेल गई थी। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही और आपकी रचना में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देखी सकती है। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। कविताओं के संकलन चित्रधारा से लिया गया है। वे आपकी कहानियां सरल शैली, मधुरता, भावनाएं, आदर्श और यथार्थ के मस्त संघर्ष पर आधारित है। आपकी कहानियां पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। आपकी कहानियों के संग्रह के नाम हैं बिखरे मोती तथा उन्मोदिनी। ये उनके कविता परिचय है। अब हम इस गुलाब सिंह इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। उसके घर में पिता थे, माँ थी और गुड़िया सिंह बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर में बुला रहा था। एक दिन की बात है कि वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वह चुप से गुड़ और चने चुरा लाई और दिल दे और अपने भैया को दे दिया। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो बिखला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। तो यहाँ पर इस कहानी के अंदर कवित्री माँ, बेटी और भाई जो दुलारा था, माँ, भाई बीमार था, माँ ने इसका खाना पीना बंद कर दिया था, तो बेटी इससे सहा नहीं गया और बेटी ने इसे चने और गुड़ खिला दिए और ये खुश हो गया। तो माँ को गुस्सा आ गया। तो गुस्सा माँ से सहकर अपने भाई को इसने, अपने प्यारे से भाई दुलारे को उसने गुड़ और चने क्या खिला दिए? गुड़ और चने खिला दिए और ये खुश हो गया। ऐसी एक नहीं था, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसका मन पर छिपा था। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी था। आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छिपे इन तस्वीरों को धो न सके। यानी इससे पहले भाई अपने बहन से जो बहन है, भाई अपने बहन से लड़ता था, झगड़ता था, फिर भी उसने अपने दुलारे भाई को चने और गुड़ खिलाए और ये खुश हो गया। इतना झगड़ने के बाद, लड़ाई करने के बाद भी क्या है, बहन अपने भाई को चने और गुड़ खिलाती है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो बीमार था, माँ ने उसका खाना पीना बंद कर दिया था। हाँ, इसीलिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि भाई एक दिन ऐसे हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में न जाने आ गई। यह हवा मन की हवा थी। बड़ा माँ भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले, शहर में अमन छा गया। एक दिन अचानक क्या हुआ, तो यहाँ पर एक वहां पर बादशाह था। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। क्या नहीं निकले? जुलूस न निकले। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले, लेकिन ये जुलूस निकालने के लिए तैयार हो गए थे। कौन? गुलाब सिंह यानी भाई और बहन। भाई और बहन दोनों जुलूस निकालना था, लेकिन बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। हाँ, तो ऐसे में क्या करते हैं, बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकाले जुलूस, क्यों न निकाले हमारा झंडा? भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा? भाई ऊंट स्वर में बोला, हमारा देश है, बादशाह का गुस्सा हो जाएगा। देश हमारा है तो हमारे मन वाले हम करेंगे। ये कौन होता है बादशाह जुलूस न निकालने के बाद?
इस तरह से भाई और बहन दोनों प्रश्न कर रहे हैं। किसे? बादशाह से कर रहे हैं। हम जुलूस करके ही रहेंगे, हम जुलूस करेंगे, इस प्रकार से दोनों अटल हैं। कौन? भाई और बहन। हाँ, तो बादशाह का सख्त हुक्म है कि वो जुलूस न निकले। उत्तर था तब तो जरूर न निकले जुलूस, हम जरूर पाएंगे, हाँ फहराएंगे झंडा, हम जरूर फहराएंगे। क्या फहराएंगे? झंडा, झंडा हम जरूर फहराएंगे। कौन कह रहे हैं? भाई और बहन कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? उस बादशाह से कह रहे हैं। हाँ, तो तब तो जरूर फहराएंगे। हाँ, झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उस अपने खेल के झंडे से बांध दिया, यानी झंडा बनाया गया। अपनी पुरानी ओढ़नी से भाई को अपनी बहन झंडा क्या है बनाकर देती है। और इसके बाद में अब भाई झंडा लेकर चला गया। अब भाई झंडा लेकर अपना भाई क्या करता है? बहन उसे अपनी पुरानी ओढ़नी से झंडा तैयार करके देती है और वो भाई उसके बहन के पास जाता है। जाकर अरे भाई जाते कहाँ हो? अभी मैं साथ चलेंगे। बहन आग्रह से बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहन को भाई को बहन कह रही, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। इस तरह से पर बहन बड़ी दूर जाना है, कहता है पर बहन मुझे बहुत दूर जाना है, थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। जुलूस में कौन जाएगा? तुम झंडा पकड़ना, तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चले जाएंगे। इस प्रकार से बहन अपने भाई को कह रही है। जुलूस कौन बनाएगा? नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हम रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई को राजकुमार को विदा करती है। भाई कहता है मेरी राजकुमारी, जिस तरह राजकुमारी अपने राजकुमार को विदा करती है, उस तरह से रोली का तिलक, यानी इस तरह से मुझे बिल्लियां लगाकर, तिलक लगाकर मुझे विदा करो। इस प्रकार से भाई अपनी बहन को कहता है। तो बहन ने खुशी की तिलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी चावल सजाई लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। हाँ, बहन ने अपने भाई की आरती उतारती है। हाँ, दिया जलाती है, आरती उतारती है और रोली लगाती है और उसके बाद में थाली लाती है। सब उसके थाली के अंदर दिया, आरती सब लाकर से आरती इस तरह से उतारती है। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आवा मंडल बन गई, यानी उसके क्या है आरती बनाती है, आवा मंडल दिखाने लगती है। उसने देवी देवताओं के चित्र में वैसा ही आवा मंडल देखा था। जिस तरह से देवी देवताओं के अंदर जिस तरह से वो चित्र हमें दिखाई देता है, ठीक उसी तरह वो दिखाई दे रहा था। भाई का चारों तरफ ऐसा ही आवा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई, यानी भाई का जो वो आवा मंडल देखकर, यानी भाई उतना ही देखकर मजबूत था, देखकर चारों तरफ वो बहुत खुश हो गई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, माथे पर तिलक लगाया, चावल दिखाती है, चावल इस तरह से बिखेरती है, यानी विदा कर रही है। जुलूस में जाने के लिए बहन विदा कर रही है। किसे? भाई को। कौन भाई? कौन? गुलाब सिंह। हाँ, गुलाब सिंह भाई है, उसे विदा कर रही है। कहाँ? जुलूस में जाने के लिए। लेकिन बादशाह का हुक्म है कि जुलूस न निकले। और इसके बाद में करती है, चावल बिखेरती है। उसके बाद में अब वह झंडा लेकर चला जाता है। भाई क्या करता है? झंडा लेकर चला जाता है, जुलूस में चला जाता है। वह बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रहती है। बहन उसके दरवाजे पर खड़े होकर देखती रहती है। कहानियों की राजकुमारी ऐसी तरह विदा देती है, झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। जिस तरह भाई को किस तरह से देख रही है, दूर से झंडा लेकर वो जा रहा है, दूर जा रहा है, ये इस तरह से भाई को देख रही है झंडा लेकर जाते हुए। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका, वह न रोका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। जब दूर जाने के बाद बादशाह के सिपाही लोग, बादशाह के सिपाही लोग, जो सिपाही लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? इसे उस गुलाब सिंह उस बच्चे को, उस लड़के को रोकते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है और उसे गोली से उड़ा देते हैं और वो गिर जाता है। उसके बाद में वह गिर पड़ता है। झंडा न गिरा, वह उसके हाथ में था, लेकिन वो गिर गया, लेकिन उसके हाथ से झंडा नीचे नहीं गिरा। हाँ, तो गोली चलते देखे कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते हुए देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था।
लथपथ पड़ा था, वह पुकारती हुई भैया भैया वह, लेकिन गोली लगते समय किसी ने उसके सामने नहीं आया, उसे कोई नहीं देखा, लेकिन उसकी बहन उसे देखा और वो दौड़ती हुई उसके पास आई और वो खून पर लथपथ पड़ा हुआ था। यानी किससे लथपथ पड़ा हुआ था? उसे गोली मार दी गई थी। कौन? सिपाहियों ने, बादशाह के। और वे लथपथ खून में लथपथ पड़ा हुआ था और रोती रोती हुई पुकारती हुई भैया 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 करके आ जाती है। आने के बाद फिर वो भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े, यानी उसकी जो जो उसका पुकारना, यानी उसकी अमृतवाणी सुनकर वो भागने लगी। वह बोला तू आ गई, वह झंडा ले, अरे तू आ गई मेरी बहन। अपने बहन को कहता है भाई, अरे बहन तू आ गई है, ले झंडा ले, अरे तेरे हाथ में झंडा ले, तू इसका नेतृत्व कर। हाँ, मैं बहन ने झंडा थाम लिया, भाई चला गया। यानी बहन को जैसे ही बहन के हाथ में झंडा थामा तो भाई ईश्वर ने उसकी मृत्यु हो गई, वो देहांत हो गया और तो भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठा रही, यानी बहुत रोई। भाई मरने के बाद, भाई के देहांत होने के बाद बहुत रोई, लेकिन हाथ में वो झंडा लेकर रही। और बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए, लोग भागे जाए, यानी उतना मारकर बादशाह के लोग इतना अफरा तफरी मचा के चले गए, लेकिन वो क्या है आगे बढ़ने लगी। लोग इधर उधर भागे हुए, इधर उधर भाग रहे थे, आए। उन्होंने भाई को देह उठाया, आगे आगे झंडा लिया, बहन चलने लगी। यानी उन्होंने उसको क्या किया, उस भाई के देह को उधर छोड़कर क्या की, ये आगे आगे वो झंडा लेकर चलने लगी। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। हाँ, लेकिन जुलूस न निकला, झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। बादशाह का हुक्म था कि झंडा न निकले, इसने झंडा निकाला, और जुलूस न निकले, जुलूस भी निकाला, और उसके बाद में झंडा नहीं निकलेगा, वो भी निकाला। हाँ, तो और उसके बाद बड़ी शान से निकला, यानी झंडा बड़ी शान से निकला। इसीलिए यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंधी बिखरता चला गया। तो सुगंधी बिखरता हुआ चला गया। तो इस पाठ का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें क्या सीखते हैं? यानी त्याग, बलिदान और भाई बहन का प्रेम और प्रजा की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, कर्तव्य क्या होता है, और चित्रण आदि का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। थैंक यू। ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶುಭೋದಯ. ಇಂದು 9ನೇ ತರಗತಿಯ 2ನೇ ಪಾಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖಕರು ವಿಜಿಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಜಿಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗುಂಡಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರ ಜನನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1916ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೌರ್ಗಂಧಿಕಾಪಹರಣ, ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರ, ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು, ಕಾಲೇಜು ರಂಗ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದವೆ. ಈ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠವನ್ನ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುಳು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ, ಅರಳಿ ಮರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಮರವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಾ ಕೂಡ. ಆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮರದ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಿತ ತಿಂತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರ. ಆ ಅರಳಿ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೇಖಕರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ
ಆ ವೃದ್ಧರ ಹೆಸರು ಶೇಷಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 75ರಿಂದ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದೆ. ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹ ಕೃಶವಾದ ದೇಹವಾಗಿತ್ತು. ಬಿದ್ದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ವು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗಿತ್ತು. ಮಂದ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರು. ಅವರನ್ನ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಕಟವಾದ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಶೇಷಪ್ಪನವರು. ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅದು ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳಿಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಇದ್ದಂಥವ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬಡತನದ ಜೀವನ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಶೇಷಪ್ಪನವರು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರಳಿ ಮರವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನಾಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೊತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಜಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ತಂದಾಗ ಆಗ ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಸೀದಾ ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನ, ಉತ್ಕಟವಾದ ಆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಲೇಖಕರ ತಂದೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಇವರ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಾಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೀದಾ ಅವರು ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ, ಉದ್ಧರಣೆ, ಹಣ್ಣು, ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು, ಒಂದು ಅನಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ತಂದೆಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವರ ಸೋದರತ್ತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಆಸೆ ಇಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಸೋದರತೆಯವರು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉತ್ಕಟವಾದ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಆಸೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಋಣವನ್ನು ನಾನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಜಮಾನರ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸದೆ ನನ್ನ ಋಣದ ಗಂಟನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊರಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರು. ಸೋದರತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೋದರತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಢಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿನಾಲೂ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬೇಡಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನದ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಜನರು ಮದುವೆ ಮುಂಜುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ದಣದು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬರೇ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಚಾವಣೆ, ಕಟ್ಟೆಯೇ ನೆಲಹಾಸು, ಮದುವೆ ಮುಂಜುವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಆದರವೀಯುವ ಸತ್ರ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಓಟ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಮರ ಕಾಪು, ಹಿರಿಯರ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪುವ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗ್ತದೆ. ಬೀದಿ ಮಾತಿಗೂ ಕಾಡು ಹರಟೆಗೂ ಕೀಟಲೆ ಕೋಟಲೆಗಳಿಗೂ ಮಾತೃಸ್ಥಾನವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಕಡುಬಡತನದ ಶೇಷಪ್ಪನ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯದ ತಿರುಳು ಇಂತಹ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಆಶಯವಾಗಿದೆ. Yes, dear students of class 9th, yesterday we know how Gandhiji influenced Vijayalakshmi Pandit with his advice, and Vijayalakshmi Pandit was also very relaxed, very happy with what exactly she got good rapport, means relationship with her in-laws. Later she went to United States. She was at New York. She was given an job to lead the Indian delegation in United Nations. There was a problem in South Africa at that time. The problem was the Indians in South Africa were ill-treated. There was a problem called apartheid. This was the policy adopted by the government of South Africa. The apartheid means ill treatment of the non-whites. This we will discuss in detail in the regular class. You must know only this much now. So apartheid was a racial problem that was being faced by Indians in South Africa. So Vijayalakshmi Pandit led an Indian delegation to discuss and debate the same thing with the delegation of South Africa. Means the Indian delegation versus South African delegation. So South African delegation was justifying the apartheid, whereas the Indian delegation led by Vijayalakshmi Pandit was questioning and they were condemning this inhumanic policy. I think you understood. So we will discuss in detail later in the regular class. So the debate was started between the two groups. One was the Indian delegation and another was the South African. As the discussion or debate was going on, there was a great and a heat exchange of words between the groups. So the South Africans were strongly supporting their own view that Indians are unfit to be good treated or well treated, whereas Vijayalakshmi Pandit with the same strong words opposed the system of South Africa. So it went on for some days. Day by day the discussion or the debate was going on very unhealthy manner. So the South African people were using very bad words to Indians, and the same way the Indians were reacting. So one day Vijayalakshmi Pandit thought, so as Gandhiji advised her, we should not go in the same path how the bad people were going. We should not react with the same bad words how the people use on us. So the next day in the debate, though the South African delegation used a lot of harsh or bad words to Indians, Vijayalakshmi Pandit took it very coolly.
she did not react with the same way to them. So this went on for 1 or 2 days. The South African delegation noticed the big change with Vijayalakshmi Pandit and her members. So as the days passed on, the discussion went on in a very smooth way, very healthy way, and the South African delegation accepted the views of the Indians, and they were very much happy with the attitude of Vijayalakshmi Pandit. So this was a big victory for Indians in United Nations. So this change of attitude by Vijayalakshmi Pandit, which was advised by Gandhiji, made her to win in the debate. So this was the second incident took place. And the last phase of this lesson is, so later Vijayalakshmi Pandit was appointed as the High Commissioner for India in United Kingdom. As I told you already, that United Kingdom means present England. Then it was called as United Kingdom. So there she was appointed as the High Commissioner for India. What the High Commissioner and all those things we will discuss later. So she was very successful over there also, and so her tenure or the period was getting over. So before she was leaving England, she invited the Prime Minister of England for the dinner and his wife, Lady Eden. So she arranged everything very meticulously. This word is used in your textbook. Meticulously means very, very carefully. So how we decorate our house, how we prepare everything when the guests come to our house, that is called meticulous. Meticulously means very, very, very carefully. She made all arrangements very carefully in her residence. And the guests came, so they were invited with great pleasure, and they were served with the drinks and everything. Good talks went on. So she ordered for the dinner. So once she told, 2 times, 3 times, but the dinner was not ready by the time. So she was getting angry because the guests were waiting. It was already too late, and she wanted to know what exactly had happened in the kitchen. So even though she informed or signaled for the dinner 3 times, the dinner was not ready. This made her to go to the kitchen and find out what exactly was happening there. When she went there, she noticed a very horrible scene over there. The kitchen was entirely not in the proper way, and the head cook was not doing anything. Actually, he was intoxicated. Intoxicated means he took alcohol and he fell unconscious. No food was ready, what she had planned. She was so angry that her blood was boiled. So blood was boiled means she was very, very angry to see the condition over there, because the elated guests, elated means the important and great guests, were waiting outside for the dinner. She was so angry that she was about to scream. She was about to scream. About to means ಇನ್ನೇನು ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಒದರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿನಂದು. But she controlled herself. She came outside to the hall and explained what exactly had happened. The guests understood the situation, and in no time some food was arranged and they took the food and went away. But before they were leaving her residence, they appreciated her quality that she honestly came and told the fact what exactly had happened in the kitchen. So she felt once again relaxed and happy that she told the truth. And if she had screamed over that who was that fellow, that cook, so there was no meaning in it. She could not do anything, she could not achieve anything just by screaming angrily. That's why she made the guests to understand what exactly had happened.
So this was the another incident where she used the policy of Gandhiji, means telling the truth, telling the fact, and be honest. So these qualities were very much appreciated by the guests. So this was how the lesson ends. So dear students, the lesson is in short what I have narrated to you. But at the end of the lesson, the most important sentence what she gives to us, this was the rule or the advice what Gandhiji gave her. That was, no one can harm you except yourself. Means our mind is our first and the last enemy. That's why we should control our mind and work. Dear students, by this the lesson comes to an end. This is a very short summary what I have told you. In the regular class we will once again discuss. Thank you, and please repeatedly listen this and you will be familiar with the lesson. Thank you very much. Good morning, students. In the last class we have learnt about the three states of matter and the definition of matter and the last topic, that is evaporation. And in this chapter, that is your second chapter, we are going to learn about the pure substances, mixtures and their types, and solution, the definition of solution, and separating methods of mixtures, and all we are going to learn this chapter. Okay. And then firstly I will define the term pure substances. Pure substances consist of only one type of substance. For example, elements. Elements like hydrogen and oxygen, they cannot be separated. Okay. Here I am explaining about pure substances, that is, it cannot be containing two or more substances, more pure substances. It is only containing of only single type of substance, that is called pure substances. Okay, it can be classified into two different types, that is elements and compounds. Here elements have only one type of element, one type of molecules or particles. It consists of only one type of molecules, that is hydrogen. It consists of only its particles, that is hydrogen atoms it consists of. Then now coming to the compounds, it is a mixture of two more different elements. Like I am combining here H plus oxygen, that is hydrogen plus water, I will get water molecule, that is H2O. Here I am combining the two different elements to form a compound. Okay, listen to it. In a definite proportion. Okay, in the definite proportion, when I combine the hydrogen atom with the oxygen atom, I will get a water molecule. Listen to it. It is an example for compounds. Now let us define the term mixtures. It is consisting of two or more different type of pure substances. Okay, I am giving here example sugar solution, or the sugar particles which are dissolved in water. Sugar solution, sugar particles which are dissolved in water. Here it will be in the solid form. Like sugar particles are crystalline solid particles. Those are which are dissolved in water, which is in liquid form. It is an example for mixtures. Based on the nature of the components, mixtures can be divided into two different types, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. In this mixture, in homogeneous mixture, this have a definite composition, that is uniform composition here. Okay, sugar will be completely dissolved in water. Listen to it. It is an example for homogeneous mixture. And now coming to the heterogeneous mixture, here the composition is not uniform, although okay, it is non-uniform composition. Here in heterogeneous mixture, the compounds are the solutions which are not in definite proportion. Okay, non-uniform composition. I am giving here example is salt. In salt, the chemical formula of salt is NaCl. Here Na will be in in higher form, or Cl will be higher form. Okay. Okay. Now I am giving example for heterogeneous mixture, that is sand which is mixed with sugar particles. Here it will be in indefinite proportion.
here sand particles will be more either or sugar particles will be more in this mixture. So it is an example for heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture, in heterogeneous mixture the mixtures do not have a definite proportion. Non-definite proportions will be there in the heterogeneous mixture. Now coming to the term solution. Solution. How do you define the term solution? Solution means here homogeneous mixture. It is an homogeneous mixture of two or more pure substances. Listen to it. It is defined as the solution. When I mix with the sugar with the water, it makes a solution, right? That will be the definition of solution. Solutions here means the homogeneous mixture of two or more different substances is called as solution. Okay. Now I define the concentration of solution. That is, concentration of solution means the amount of solute. To explain the term solute, I am taking the example sugar solution. Here sugar which is dissolved in the water, the sugar will be called as solute. Okay. Sugar is called solute here and water is called solvent. Okay. Here I am going to define the term concentration of solution. Okay. To define concentrations of solution, I need two terms, that is solute and solvent. Okay. Solute here is in the sugar solution, solute will be the sugar and water is the solvent. The amount of solute which is present in that solvent is known as concentration of solution. The amount of solute which is present in the solvent is known as amount of the solute is known as concentration of solution. Okay. Now I am coming to the separating methods of mixtures. Mixtures can be separated to different ways. Those are evaporation, centrifugation, decantation, and some more examples are there. You have already learnt about the term evaporation. It is changing the liquid state into gaseous state. Listen to it. Liquid into gaseous state, that is evaporation. If I want to evaporate, if I want to separate the sugar from the water, I need to go with this method, that is evaporation method, to separate the sugar from water. Okay. And centrifugation. In the centrifugation, if I want to separate the butter from the curd, listen to it. I am going with the centrifugation. When we stir the curd, the force will call centrifugal force, which is where the butter will be concentrated at the center. From that method, we can extract the butter from the curd. It is an example for centrifugation. Okay. And decantations, it is an example for separating the oil from the water. Oil and water, those cannot be mixed each other at one time, but if they are mixed, we are using separate funnel for separating them by the process called decantation. Now you have learnt the definition of the solution and the concentration of the solution. How the concentration of solution will be expressed? Okay, it will be expressed by the mass by volume method or by mass percentage method. That is, amount of solute divided by amount of solution into 100, you will get the percentage of concentration of the solution. In this way you are going to express the concentration of solution. Okay. Now we are going to learn the different types of solution based on the solid particles, based on the solvent, and based on the physical and chemical changes. We are learning about different types of solutions. Listen to it. Based on the types of size of the solid particles, we are having three different types of solutions. Those are true solution, colloidal solution, and suspension. Here in the true solution, the solution will be homogeneous, that is, which is having uniform composition. Listen to it. In the true solution, the solution will be in the homogeneous, which is having uniform composition. And then we are going with the colloidal solution. In this solution, the solution will be in the heterogeneous form, that is heterogeneous mixture here. Solution will be heterogeneous form. And suspension solution also, the heterogeneous form of solution will be present, and that is doesn't having uniform composition throughout the
Start. In the colloidal solution, the solution will be in the heterogeneous form. That is, the solution will not in the uniform composition throughout. Okay. Now coming to the suspension, here also the solution will be in the form of heterogeneous form. That is, your non-uniform composition throughout. Okay. And in the true solution, the size of the particles will be ranges from 1 nanometer to 1000 nanometer. The size of the solute particles ranges from 1 nanometer to 1000 nanometer. And in the colloidal solution, the size of the solute particles which ranges from 1 nanometer to 1000 nanometer or more than the 1000 nanometer. And in the suspension solution, the size of the solute particles that will be ranges from more than 1000 nanometers. Listen to it. In the true solution, the solution particle or the solute particles which cannot pass through the filter paper. Listen to it. In colloidal solution also, the solution or the solute particles which cannot pass through that filter paper. And in the suspension particles which are having more than the 1000 nanometer size of solute particles, it can also pass through the filter paper. Okay. And then based on the type of or the nature of solvents, we can classify the solutions into two different types, that is aqueous solution and non-aqueous solution. Based on the nature of the solvent, we are going to classify solutions into two different types, that is aqueous solution and non-aqueous solution. In aqueous solution, the solvent will be always water. Listen to it. In the water will be solvent in the aqueous solution. In the non-aqueous solution, the solvent will be other than water, that is alcohol, ether. Those are the examples for non-aqueous solutions. And now let us going to define the physical change and the chemical change. What is meant by physical change? The change which doesn't result in the form of a new product. In the form of a new product, that is called physical change. For example, I broke a glass. Okay, if I broke a glass, I get pieces of glasses. Listen to it. Here there is no any formation of new compound or new product there. It will be an example for physical change. And now coming to the chemical change, the change which results in the formation of a new substance, that is called chemical change. The change which results in the formation of a new substance, that is called chemical change. Okay, this concludes your chapter, that is second chapter, that is matter around us is pure. Good morning, children. Today I want to start the second lesson in history division. The second lesson is medieval India and political transition. Before start the lesson, I want to say what is meant by medieval period and what is meant by political transition. The period between the 8th century to 14th century is known as medieval period, and transition period, the second half of the 50 years of 12th century and the first half of the 50 years of 13th century is known as transition period. Let us start our lesson. In the lesson medieval India and political transition, you are going to learn important topics like the major dynasties of Rajputs and the contributions of the Rajputs in the field of literature, art and architecture. The third topic is the arrival of the Turks. And next topic is the attacks, invasions of the Muhammad Ghazni and Muhammad Ghori. And the last topic is the contributions of the Turks in the field of art, architecture, literature, etc. Let us start from the first topic, major dynasties of Rajputs who ruled in North India. Here, among the Rajputs dynasties, first one is Gurjara Pratiharas, Garhwalas, and third one is Paramaras, and Solankis, Chandelas, and Chauhanas. Almost all these Rajput dynasties ruled in North India, especially from the Rajasthan. Rajasthan is the main center of the Rajput dynasty. Among all these dynasties, I want to focus the Chauhana dynasties. The Chauhana dynasty started the rule from 7th century. They started rule from the Ajmer of Rajasthan. Especially
among the Chawana dynasty, I want to describe about the Prithviraj Chauhan. Dear students, already you came to know that maybe TV telecast the serial of the Prithviraj Chauhan in the name of the legend of Prithviraj Chauhan. Prithviraj Chauhan started its rule from 12th century. He waged a series of wars against the neighboring Rajput dynasties, but among the all wars waged by Prithviraj Chauhan, two wars are very important. They are First Battle of Tharain in 1191. Prithviraj Chauhan waged First Battle of Tharain in 1191 about Muhammad Ghori. In First Battle of Tharain, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori. But in Second Battle of Tharain, 1192, Prithviraj Chauhan defeated by Muhammad Ghori. Next, we shall discuss about the second topic, arrival of the Turks. Here, Alaptagin, he belonged to Ghazni. Basically, he was Turks. Turks are the nomadic people. They came from the Central Asia. The Turks occupied the major parts of India. Alaptagin, he belonged to Turks, and basically Turks are belong to the Mongolian tribes. Alaptagin started his kingdom in 963 in Ghazni of Afghanistan. After Alaptagin, Muhammad Ghazni, he started his rule in 999. He looted the huge wealth from India. Basically, Muhammad Ghazni don't want to establish the empire in India. Just he want to loot at the huge wealth, enormous wealth in India. For example, he looted the Somnathpur temple of Gujarat. Afterwards, after the Muhammad Ghazni, another dynasty, Shan Shabani, another dynasty established in Ghor of Afghanistan. Ghiyazuddin Muhammad was a famous king of the Ghor dynasty. Ghiyazuddin sent his brother Mujahiddin Muhammad. In history, Mujahiddin Muhammad only popularly known as Muhammad Ghori. Muhammad Ghori wanted to establish the independent huge empire in India. He started the invasion on India from the northwest part of India. He started his journey of war through the Multan. Multan is located in the northwest part of India. He waged several wars on India, but in 1191, Prithviraj Chauhan, earlier what I said, Prithviraj Chauhan defeated the Muhammad Ghori, and next Muhammad Ghori defeated the Prithviraj Chauhan. In this way, Muhammad Ghori laid a strong foundation in India. Next, I want to say about the major contribution of the Rajputs. Rajputs made very good contribution in the field of the literature, art, architecture. In the field of literature, Jayadeva, famous author Jayadeva wrote Gita Govinda, Chand Bardai wrote Prithviraj Raso, and Bharavi wrote Kirata Arjuniya. In the field of art and architecture, the Rajputs constructed huge, beautiful temples and forts in the place like Ajmer, Mandu, Chittoor, Gwalior, Jaipur, Udaipur, etc. Next, in the after the Ghor dynasty, the Turks made a very good contribution in the field of art and architecture. Then the Turks people laid a strong foundation in India. They gave much importance to centralized administration, and number of famous authors wrote number of books, my dear students. And next, after the ruling period of the Turks, the Delhi Sultans started their rule in India. In this way, the Turks laid strong foundation for Turkish rule in India. Thank you, one and all.